Hello everyone, this is Pravesh Mohe from My Medical Studies. So we are making this video in continuation to our first video which we had published a few days back. So this is going to be on USMLE. So thank you so much first of all for the response. हम लोगों को आपकी इतनी सारी emails आई, बहुत लोगों ने बहुत सारे questions पूछे. So एक छोटी सी presentation बनाई है मैंने. So I'll be looking a lot at my computer also today. So उसमें we are covering all the aspects, all the questions which you have asked. So some of the questions which you guys have asked is what is USMLE step 1? What does the USMLE step 1 emphasizes on? What is the duration? Who fixes the paper? सेंटर्स कहाँ बनते हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस कितना परसेंटेज कवर करेगा, व्हाट परसेंटाइल इज बीइंग कवर्ड बाय व्हाट सब्जेक्ट, हाउ मच थ्योरी, विच सब्जेक्ट का थ्योरी कितना पढ़ना है. सो वी गोइंग टू cover this all. I have some notes and we have a small presentation as well. First question first, what is USMLE step 1? So सबसे पहले it is a, जैसे आप लोग इंडिया में MCI का एग्जाम देते हैं जब आप इंडिया overseas when you study and when you come back, so you have to give an MCI exam. The same way when you want to go overseas to say United States of America and do your study of medicine, उसको हम post graduation कहते हैं, so you have to give USMLE. So that is what USMLE is. So the other way in which I understood this question is that maybe you wanted to ask what is this exam, what all is covered and क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखनी चाहिए. तो इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो सिर्फ आपकी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस्ड है. सो दिस इज़ वेरी बेसिक एंड इंटेग्रल साइंस एग्ज़ाम एंड इट विल बी टेस्टिंग योर कैपेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग the theory to the clinical aspect as well. This is just to make sure that you have proper understanding of your subjects. आपको science, basic science की proper understanding है, and with that understanding you have the capability of putting it into use when it comes to the clinical aspect also. So the second question was, what is it going to emphasize on? So this is going to emphasize on basic science. I will tell you the subjects which are going to be covered in detail. सो मेन जो आप कह सकते हैं एम्फसाइज, मेन जो स्पॉटलाइट है वो आपकी बेसिक साइंस और उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ेगी. मोर और लेस आपके फर्स्ट 2 years के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेप 1 में कवर हो जाते हैं. एंड उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन विच आस्क्ड हाउ लॉन्ग इज यूएसएमएलई स्टेप 1. यूएसएमएलई स्टेप 1 की ड्यूरेशन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. सो द यूएसएमएलई स्टेप 1 इज a 7 set and every set has 60 minutes. So more or less it is going to be an 8-hour examination which is going to cover 280 questions. So in all, in that 8 hours you have to answer 280 questions. Like I had assured you earlier also, this is not going to be an 8-hour continuous exam. So you're not going, they are not going to physically challenge you and train you to write this exam. You get a break. You get a break time of 1 hour which you can divide like I told you earlier also. So this can be divided 5 minutes after every set, after every 1 hour test हम लोग उसको बोल लेते हैं. सेट की जगह आपके उस 8 घंटे में उन्होंने 7 पेपर लेने हैं. तो अब इसमें मेरे को पिछली बार क्वेश्चन ये भी किसी ने पूछा कि सर व्हाट आर द 7 सेट्स, आर देयर गोइंग टू बी 7 डिफरेंट सेट्स, मतलब हर सेंटर में अलग अलग टेस्ट देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा. 7 सेट मतलब 7 अलग अलग आपके पेपर होंगे उन 8 घंटों में. हर पेपर में आपको 40, हर सेट में जिसको हम हर पेपर कह रहे हैं उसमें आपको 40 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे. ये वेरी कर सकते हैं टेस्ट टू टेस्ट. हो सकता है किसी में 50 आ जाए, किसी में 30 आ जाए, इस तरीके से, लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक में यू आर गोइंग टू आंसर 40 क्वेश्चंस. इन ऑल इन दी 7, सो 40 into 7 बेसिक मैथमेटिक्स हो जाती है डॉक्टर बोलने वाले हो. तो इट इज गोइंग टू बी 280 क्वेश्चंस. 280 questions, 280 questions you have to answer in these 8 hours. How is your break time divided? You can take this break of which is about 1 hour in one go, and or you can divide it in after every one examination you can take 4 to 5 minutes break in between. 3 exams इकट्ठे लिख सकते हो. So pretty much welcome to do that. You'll save a lot of time that way also. But again, depends on you. There was a question which
was very smart and made me smile also. Who designs this paper? USMLE बनाता कौन है? USMLE is designed by professionals who are doctors, who are into life sciences, paramedics, people into insurance. So very renowned and famous big names of United States of America who sit together, they have a council and they prepare this question so that they can assess you that what is the future of medicine going to be like. So it is not going to be like I said in the previous video also, it is not going to be a very easy examination for you. It is going to be a very challenging, as I might say, not difficult but challenging exam. It is prepared by very reputed and big names of United States and Canada. So you are being tested by the best to become the best, as we can say. Where and when can we give this exam? So ये examination, like it is a global examination. Students from across the world are sitting for this examination. So they have centers globally. So students from United States of America, Canada, India, European countries, Asian countries, they have their own centers which are called Prometric test centers. So they are based, you can say, across the world, and आप लोग वहाँ जाकर के पेपर दे सकते हैं. And when to give this exam is a very this is a very different sort of a question. Logically speaking, जो स्टूडेंट्स ने अपने MBBS के साथ साथ में USMLE क्लियर करना होता है, the students who want to clear it as soon as they clear their MBBS as well, 1 year plus minus. So they start sitting for this exam from the second year as soon as they finish their second year. So second year complete करते ही USMLE का step 1 वो साथ में दे देते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में होना है. So it's going to be in their own country. अब इसमें आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा, आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत टेस्ट होती है. They are going to test your clinical knowledge as well. So आजकल the students who are saying that we are going to universities who don't have their own hospitals, they have to be very very particular about this, because your clinical skills, like I said, what is the examination? They are going to test your academic knowledge towards how you use it clinically. Clinical experience नहीं होगा तो second year के बाद ये पेपर देना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा. But what USMLE board and United States of America board जो बोलता है वो ये बोलते हैं कि you start giving this exam after the second year of your MBBS, and syllabus जो उन लोगों ने आपको first 2 years में पढ़ाया है more or less वही cover होगा. There's nothing which will be coming outside of those 2 years more or less. Again एक question था कि what are the topics or what are the general principles. एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि general principles वो कौन कौन से हमारे से पूछेंगे. What are the general principles they're going to ask? So general principles, they'll ask you immune system, blood system, your nervous system, renal and urinal system, multiple disorders के बारे में जो they have taught you in first 2 years. They will asking you questions on that. Then cardiovascular, your muscles and tissues, they will be asking you questions on that as well. They will be covering the neuro part of the basic science as well. So neuro जो है वो आपको third year से बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है. So first 2 years में आपको जो basic knowledge दी जाती है of the subjects, इसको चीज़ का bullet points मैं आपको description में mention भी कर दूंगा. All the things which will be covered, principles जो cover होंगे, we will put it in the description as well so that nothing is missed. Again, there was a student who asked me, what are the subjects क्या क्या step 1 में हम लोग cover करेंगे. So step 1 is going to cover psychology, biochemistry, anatomy, आपका path का subject pathology, microbiology, behavior science, biostatistics and population health. So these are the subjects जिसके ऊपर ये आपको questions, they will be asking you a lot of questions. अच्छा, you have to take into account some more subjects as well: genetics, ethics, nutrition, aging, and molecular cell biology. So ये 5 चीज़ों के बारे में भी आपको एक proper idea होना चाहिए. You should have proper idea on these subjects as well. Questions इसमें से आते हैं. अच्छा, अब एक मेरे पास क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना आएगा. जनरल प्रिंसिपल्स में से आपको 13 to 17% आएगा. रेस्पिरेटरी
यूरिनल सिस्टम में से 9 to 13%, बिहेवियर हेल्थ एंड स्पेशल सेंसेस, न्यूरो से रिलेट हो गया ये, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, बिहेवियर हेल्थ एंड स्पेशल सेंसेस, इसका आपका परसेंटेज होगा फ्रॉम 9 to 13 अगेन. रिप्रोडक्टिव एंड एंडियो केयर सिस्टम, दिस विल कवर अगेन 9 to 13%. सो ये जो तीन है सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको भी बताए, इसमें आपको 9 to 13% ऑफ द पेपर आएगा. 7 to 11% आपका आएगा इम्यून सिस्टम और ब्लड में से. मल्टीपल सिस्टम प्रोसेस एंड डिसऑर्डर में से भी यू विल गेट अबाउट 7 to 11%. स्किन एंड टिश्यू covers about 6 to 10% of your syllabus. So the maximum chunk goes to 13 to 17%, which is general principles. So the basics of the science. अब प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेसेस में से कितने कितने परसेंट किस किस प्रोसेस को जाएगा. सो नॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रोसेसेस covers about 10 to 15% of this paper. Abnormal processes will cover about 55 to 60% of this paper. Principle of therapeutics is going to cover about 15 to 20% of this paper. साइकोलॉजी, कल्चर, ऑक्यूपेशन, एनवायरमेंट, इसमें आपका 10 to 15% जाएगा. सो दिस मेक्स अबाउट 100% ऑफ इट. सो अगेन व्हाट इज द मैक्सिमम चंक विच गोज टू, इट गोज टू एबनॉर्मल प्रोसेसेस. अब जो फिजिकल टास्क एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, उसमें कौन कौन सा पार्ट, क्या क्या क्राइटेरिया, कितना कितना परसेंटेज आपका कवर करेगा, वो ये है. मेडिकल नॉलेज, अप्लाइंग फाउंडेशन एंड साइंस कंसेप्ट्स 52 to 62%. पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस 20 to 30%. अब देखिए 70% तो इसी में कवर हो जाता है. दो चीज़ें, अप्लाइंग फाउंडेशन साइंस कंसेप्ट्स और डायग्नोसिस, पेशेंट केयर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल सिलेबस. अब जो बचा हुआ है, पेशेंट केयर टेक्स अबाउट 7 to 12%. डिसिप्लिन्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, कौन कौन से पार्ट्स कवर होंगे, कितनी कितनी परसेंटेज जाएगी, आई विल गाइड यू ऑन दैट एज वेल. पैथोलॉजी 45 to 52%. फिजियोलॉजी 26 to 34%. फार्माकोलॉजी अबाउट 16 to 23%. बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 14 to 24%. माइक्रोबायोलॉजी 11 to 15%. ग्रॉस एनाटॉमी 11 to 15%. हिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी 9 to 13%. Behavioral science 8 to 12%. Genetics 5 to 9%. Immunology 7 to 11%. Again, this sums to about 100% of the total thing. इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि 45 to 52% जो आपका एग्जामिनेशन है वो पैथोलॉजी में से आएगा. So these are some subjects जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दिस इज हाउ द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड परसेंटेज वाइज, कि आप किस किस डिसिप्लिन को, किस किस सब्जेक्ट को कितना, हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड ऑन इट एंड हाउ मच prepared you should be so that you can crack your USMLE. There are a lot of other questions which you have asked also, which are for step 2 and step 3. So we have made this video just for step 1. So this is a video just covering the step 1. Step 2 and step 3. I would request you to stay tuned to our channel. We will make another video covering just the step 2 and step 3 of USMLE. I hope the information you've gathered was of some help to you. Do hit the subscribe button and we will be back with another video very soon. Thank you.